you have got one this feedback form. This is very, very important, right? So give honest feedback here so that we count on all of these things, whatever you have given, and it will be just those things which we see, which we analyze, and we will be trying to improve also. So that is something that will be something customized according to your demand and need. So here, quality of teaching, classroom facilities, course content, teacher interactions, clarity of instructions, all of these are being given. And you have to mention what is your UPSC target year. UPSC target year, that you have to mention. And if at all you have given mains or you had already attempted UPSC examination, that you have to mention. And then your score in the essay paper. For example, if you scored bad or certain marks, for example 60, 70, 80, 100, whatever marks you have scored, you have to mention here so that we know from here we have to improve. So this is clear, I think. And the next part that I wanted to mention for those who are watching us online, तो ये हमेशा होता है कि PDF कहाँ है? Everybody asked in the YouTube video, and that is, sir, PDF कहाँ है? Where I have to find PDF? So PDF is already being linked in the description. So see there. मतलब इतना cautious रहना है, देखना है before you comment कि PDF कहाँ है. So that aspect is being there. Next is with respect to essay. So there are certain aspects in which we have to focus. First, you have to understand that in essay, this paper actually provides you opportunity to score huge marks, right? We have already seen in various toppers mark sheet also in the previous lecture live session that we have taken. We have told 2 examples, and there are multiple of those examples. First one was Pridarshini Bhattacharya. She got how much marks? 176. Apurva Gupta. Yes, Apurva Gupta. She got how much marks? 175. Vikram Garewal. He got 151. So this paper provides you opportunity to score huge. No other, even for that matter, no other optional come close to the percentage of marks that essay gives. So you have to be very, 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 very attentive from here. Whenever you are attempting, see, अभी हम लोग जो भी जिस भी month में है, for example, we are sitting in November, और now after some time we'll be also having mains. मतलब कि अगर मैं देखूं तो लगभग 180 दिन है. कितने दिन है prelims के लिए? 180 days. Now these 2-3 months will be very, very crucial for your mains examination. Very, very crucial for mains examination. You have to strategize this time. And if you have to make your score card also, and if we see from reverse, you should be seeing somewhere. अगर मैं देखता हूं कि पहले दिन आप दे रहे हैं, आप ऐसे दे रहे हैं. Here you should be targeting how much? कितना टारगेट करना है हमें? कितना? 150 के अराउंड. कितना टारगेट कर सकते हैं आप कि अराउंड 150 यू शुड बी टारगेटिंग. एवरेज स्कोर हियर इट इज अराउंड 130. लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का अगर आप स्कोर देखते हैं तो यू विल फाइंड दैट द एवरेज स्कोर वाज अराउंड 130-120. दोज हु वर इन द लिस्ट टॉप 100, टॉप 200, they were getting these scores. But you should target for more than 150 marks, 140 marks, that you should be targeting. और उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप ये अभी इतना वेल इन एडवांस यू आर प्रिपेयरिंग, यू हैव स्टार्टेड एवरीथिंग, सो यू शुड प्रैक्टिस. ऐसा बस नहीं कर लेना है कि पढ़ा और चले गए, सिर्फ क्लासेस कर रहे हैं. डू नॉट ट्राई टू बिकम अ पैसिव लर्नर. यू हैव टू बी वेरी, वेरी एक्टिव. कि क्लासेस जब हो रही हैं तो आपको इस तरीके से करना है कि वट एवर क्लासेस इज बीइंग गोइंग, सो यू हैव टू बी वेरी, वेरी अटेंटिव. ट्राई टू पॉन्डर ओवर दोस थिंग्स कि वट एवर यू हैव लर्न. फॉर एग्जाम्पल टुडेज टॉपिक वुड बी जस्टिस, आई गेस. So let me give you 2 minutes for all of you. What do you mean by justice, right? So एक brainstorming करते हैं कि what do you mean actually by justice. So take out one piece of paper and try to ponder over those things, whatever you have studied. See, in essay we have linkages from all of your GS papers, paper 1, paper 2, paper 3, paper 4. All of your knowledge will be required here. So
try this thing कि I am giving you 2 minutes and try this aspect कि justice से आप क्या समझते हैं? What do you mean by justice itself? So please try to note about कि आपने जितना भी कुछ अभी तक पढ़ा है उससे आप जस्टिस क्या समझते हैं, जस्टिस से आप क्या समझते हैं, दैट यू शुड बी राइटिंग विद इन 2 minutes. टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो टाइम इज 17:20. 5:20 हो रहे हैं. 2 मिनट दे रहा हूं तो 5:22 तक यू विल बी राइटिंग. आनंद सोचना है. Now your time is up. You have written the definition of justice, what you perceive as a justice, right? Now try to think this concept of justice from multiple of those aspects like social, economic, political and environmental. Now what you have to do, I am giving you 2 minutes more just to write examples from social, economic, political and environmental justice. So what you'll be doing, now you have written the definition of justice as such, and then since ma'am is coming now, so what you can do, you have to take this piece of paper, whatever you have written just now, and now what you'll be doing, you'll be relating all of those conception. Whenever ma'am is teaching, you'll be relating all of those things. Then it will be becoming your body wala part in your essay. And thereby, when you interlink social concept with respect to economic concept, environmental concept, all of that will have organic flow. So with that, let's welcome ma'am also. Okay. So good evening, all of you. So hopefully you have understood the course flow. Fine. So some of you have attended some classes earlier. So in this class, who are not students here, Pol Sciences students?
Okay. You attended 1 or 2 class. I have seen you. Okay. Online. Means anybody from non-political science background. You. जरा माइक ले जाएं. क्या क्या बैकग्राउंड है वो बताना है. What is your background? Ma'am, my background in graduation was political science, but as my optional, it is sociology. Humanities. Yeah. Okay. So let me cut it short. Non-humanities. Only those who are not students of PSIR and non-humanities. You science or engineering? Okay. So, pardon? Optional is PSI. ऑप्शनल है और पढ़ रहे हैं, आप साथ में पढ़ रहे हैं. Right, ma'am. मतलब जो बिल्कुल किसी और दुनिया से है फाइनली है. GTOs. ऐसा कोई इंसान यू and your optional is anthro. Okay. So do you have some idea about writing? Have you read ethics portion, subjectivity, etc.? Okay. So mostly all of you are from, like, little bit of humanities. Fine. So now we will start essay program. So how I have done the program previously and how I intend to do this year also. We will take previous year questions as the base, fine, and the topics which have come, basing on those topics itself, I will discuss one PYQ of that topic. For example, today's topic, I have taken topic of social justice. So we will discuss PYQ on that, and then related to that, there will be a test, fine, where you will write the test on the basis of your own understanding, and then I will discuss the answer. And writing is actually the most difficult part. So you have to be realistic, and it will evolve gradually. So you are here to learn, and learning is an evolution. So don't expect that you will be writing perfect answer. In fact, there is no perfect answer. Nothing can be perfect ever, because everything keeps on evolving, and the things which look perfect today may not look perfect tomorrow. So just have an open-minded approach, not very mechanical approach. That is essential. And I will develop your ability to think and your ability to write things in a systematic manner. Fine. So, first of all, have you ever thought what would have been the rationale behind UPSC introducing essay paper? Because if you are going to do something, you have to understand what is the philosophy behind it, what is the purpose, because what skill are they looking for in essay, or why essay paper? And then second thing is, if I had been preparing in your place, the very first question that would have troubled me, why this paper? Okay. And then the second thing is, I would have seen the instructions, and the third thing is the trend. And after that, I would have done trend analysis, that over a period of time, how this paper has evolved from where to where, and why. Again, a why question is important. So do you understand
why essay paper? And how important is this paper considering the amount of time you require? Let's say GS paper 2, you have constitution, social justice, IR, governance, and it takes a lot of time and efforts to reach to 100 plus marks. GS paper 3, another challenging, so many other areas. At least there is some coherence in 2, but not that much coherence in 3 or 1. There is a greater coherence in ethics, but strategically, I'll say with minimum efforts, and if you are in my class, no efforts. Okay, no efforts, you can get very easily if you will follow the whatever is being, if you get right, like what I want to convey, if you get it right, we can easily get somewhere 120 to 130, and many things will also depend upon how much efforts we can stretch to 150 also, but let us be reasonable, 120 or 130, fine. So minimum effort, and because these topics, normally those who have attended the essay class, they felt as if it is something, they get refreshed in the class, because we are discussing philosophy, we are discussing ideas, which itself is a source by which like your intellectual curiosity gets solved. So this class is actually not a class, especially the essay class. I will say it is all about, you will find a new, like you will find it refreshing, you will find a new source of confidence, and don't consider it as a class, fine. So maybe you will have a different experience. Now the first thing is, in order to understand essay, why some students score, why they don't score? Again, because it is also the time of prelims, and you all associate essay with mains. So maybe after a certain point, your motivation may not remain. So I should have very clarity over what I am doing, why I am doing, what I am going to get out of it. And the most important thing in this exam is you are able to overcome. Your mind will always tell to avoid the things. Our mental makeup is, if something is difficult, we can very easily find the excuses to avoid the things, and avoiding things is very easy, doing things is difficult. And doing things, if you start doing things, you are overcoming your weaknesses only. So it doesn't matter, essay class is not going to impact your prelims, nothing is going to impact your prelims except your mindset that there is a problem, fine. So if you think there is no problem, things can be managed, you can easily manage, it's all in the mind. Okay, so come to the very basic question, and I always suggest to take UPSC preparation in a very holistic manner. Don't segregate subjects, don't segregate prelims, mains, interview. The bottom line of this exam is, person should have ability to think critically, ability to understand the things. So it is all certain personality things which matter in UPSC, and whether do you know how to manage the things or not.
And if it is learning, it has to be something continuous. That continuity is important. Okay. So do you understand why the essay paper has been introduced and how important is the paper? Why it has been introduced? Anybody would like to guess? Yeah. Okay, yes. So basically, three papers, because the basic philosophy of UPSC is you don't have to become a professor, you should be a personality which is appropriate for administration in Indian circumstances. And India being a developing country where there are huge challenges in administration, lot many things to do, limited resources, and of course, a very difficult and indisciplined people. So, are you the right person who can manage this pressure? It is all about, are you the right person who knows how to manage the things? Fine. So, it is a personality exam, and three papers are very important. Ultimately, it is your interview, which itself is 275 marks, your ethics, and your essay paper. So this helps them because 20-30 minutes interview may not be sufficient. So the most important component of the personality test is actually your essay paper. Interview, you are only speaking. But in essay paper, in interview, you are thinking and speaking. But here you are writing. Fine. You are writing and you are supposed to write in a way that other person understand. Your writing appears appealing. Somebody is compelled to read, and somebody finds that you deserve good marks. So obviously in this scheme, because even in ethics, like there are many questions, you can get more marks if questions are more, and the chances of scoring well is less if there are only two questions. Okay, so this is not only you will have to, this is where your personality, because the essays will judge your value system, essays will judge your way of analyzing things, essays will judge your way of putting up the things, it also will judge the depth of your knowledge on a particular area. So it is going to judge many more things, and they have more time to judge than your interview paper. Okay, and later on you will have to write reports, you will have to present, let's say, India's perspective in WTO or climate change or G20, etc. So you should have that ability, because it is not so easy to write. It is not so easy that somebody can write in a manner which is required. Fine. So normally, if you are, and then here you require a command on language also, communication, language, this command, you require critical thinking also, because essay is what? There is a thesis, and you have to either logically, we are not writing opinions. There is a difference in writing opinions and articles in newspaper.
and writing an essay, because opinion is it's very light in comparison to essay. An essay is like on one particular topic. You have to write in a very systematic manner. There has to be a flow. There has to be a structure. Often in answers, structures are missing. There has to be a logical thinking, sound arguments. And in essay paper, students do not get marks when they don't write essay. In essay paper, you don't write essay. Fine, you write essay. है ना? When you don't understand, you don't write essay, you don't fulfill the requirement, you write essay. So when you write essay, you write any stupid thing and you expect you will not get marks. You will get marks when you will write essay. ऐसे पूछा है तो ऐसे ही लिखना होगा, ऐसे वैसे नहीं लिखना होगा, है ना? तो ऐसे में यही है कि ऐसे में मार्क्स कब नहीं मिलते या मेंस में मार्क्स कब नहीं मिलते, जब आप क्वेश्चन का आंसर ही नहीं लिखते। तो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा, जब आंसर ही नहीं लिखेंगे तो मार्क्स किस चीज का मिलेगा? कि जो मन में आया लिख दिया। तो ऐसे का अपना एक एकेडमिक स्ट्रक्चरिंग होता है, एक डिसिप्लिन होता है, ऐसे राइटिंग होता है, ऐसे राइटिंग का एक तरीका होता है कि आप उस थीम को समझे, उस थीम के फेवर में लिख रहे हैं, उस थीम के अगेंस्ट लिख रहे हैं, एविडेंस बेस्ड लिखना होगा, लॉजिक बेस्ड लिखना होगा। तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, बहुत डाइग्रेस नहीं करना है, इशू के ऊपर पहुंचना है। तो यू हैव टू फॉलो। ऐसे इज you are writing something on a specific topic in depth. Okay, so a specific topic, you have to reach to that depth, and over a period of time, from social issues and very explicit topics, they have moved to abstract areas, because you need to be more visionary in your thinking. You should have more in-depth thinking. There is a difference between state services and UPSC. So you have to write essay at a different level. And you all know that the basic purpose is elimination. Okay, so content rich, and again, you write essay for different purposes. But here we are writing essay for civil services. Means in essay, there is a difference in philosophical essays for philosophical academic paper and philosophical essays for UPSC, because here the angle of public policy is very important. Fine, so every topic you have to contextualize from the perspective of a public policy. And essay is something where they want to know you, your vision. So essay is never complete if you just write from with reference to different people or scholars. So there is a limit. Essay should dominate you and your personality, your thinking, your point of view. So you need to follow certain things and think, because not easy but also not difficult if you enjoy the writing of essay. So you will get marks if they ask essay and you write essay. So an essay is a very elaborate thinking, structured, logical, systematic thinking on a specific topic. Okay, so today I have chosen the topic of social justice. Why I have chosen the topic of social justice? Because here I am talking about philosophy,
but not a core philosophy, but philosophy which comes in the domain of public policy. That angle of philosophy which has to do with administration. ठीक है, तो social justice, if you are talking from the perspective of an individual, we talk about ethics. Fine. But when we are talking about collectivity and state, we are entering into social justice. So basically, it is about public policy, and you study about public policy across the papers. For example, in your governance, public policy is related to political economy in a big way. So your paper 3, you study about inclusive growth, sustainable development type of things. Then in your paper 1, you have social issues. Okay. So this should be the right approach to start the philosophical topics, and it is not very abstract, and hopefully you have read about the economic theories and models. Okay. And how are we going to develop? Another thing is, do you understand what is philosophy and what philosophers actually do? What is the purpose of philosophy? Philosophy means you are taking your knowledge to the next level. Fine. So there is a difference between science and philosophy. So science is something explicit. Science belongs to the empirical world, the world where we are observing the things. But philosophy, one prominent branch of philosophy is metaphysics. So going beyond the physical world and looking and finding the reality which is somewhere grounded deep. Fine. So that is why when you do philosophy, you have to deconstruct something to find out the truth. So philosophical essays need deconstruction, and then they need reconstruction. So reconstruction means you are reconstructing. It should not be overloaded with the ideas of only others. You should have something which is from what is your reconstruction of something. You should be visible, your personality should be visible there. So philosophy is finding the deeper meanings, deeper truths. Philosophy is based on logic, and here they are expecting you to reconstruct and present your perspective, which is the special part of essay, which is you don't have much scope in other papers, but here the purpose is that only. Okay. And the other thing is, philosophy means you go deeper. Fine. So deeper means go to the concept. So the father of philosophy, Socrates, calls philosophy as true knowledge, ultimate knowledge. So ultimate knowledge means conceptual knowledge. So philosophy you can do when your knowledge is not superficial, but it is very foundational. So ability to explain the concepts is important. So if social justice, do you understand what is justice? Okay. So coming to the definition of justice and your definition of justice. So you may be knowing different definitions of justice. Analyze it.
and on the basis of that, what is your definition of justice? How do you look at justice? Okay, so let me show you the real question which has been asked and which I will be discussing. Fine. So this question was asked in 2020, that there can be no social justice without economic prosperity, but economic prosperity without social justice is meaningless. Fine. So you can write this topic and we will deconstruct this topic. So the topic is, there can be no social justice without economic prosperity. But economic prosperity without social justice is meaningless. तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है, दे वांट टू सी योर एबिलिटी ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन. तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट you go with the statement. You can write the counter statement. Fine. But in India, I don't think we will be able to write the counter statement. If this essay had been in USA, they could have focused on economic prosperity alone, because in USA they have thinkers like Milton Friedman, there are thinkers like Robert Nozick, there are people who favor pre-market economy, those who will favor growth over distributive justice. But in India, I don't think this argument will be sustainable. This argument may be sustainable if we are writing pure economic essay. But here we are writing from the perspective of a civil services. So civil services is public service for the state, and the state exists for social justice. Fine. So we have to have the primacy, means I will be writing in favor of this statement. Plus, I will also be questioning why the primacy, like only economic prosperity, is not sufficient. Okay. Now, let us, how to start? You should read this topic again and again. So when you read, this is a technique. When you read the topic again and again, the essence of the topic starts coming out. So maybe in first reading, you may not capture the essence, because in political science classes, in some classes, I have discussed the techniques of interpretation of classics, and where Leo Strauss says, if you will read again and again, read between the line, the meanings start appearing. Fine. So the first technique is always in philosophical essays, his approach is philosophical approach. So read the text again and again. Fine. So the text is saying there can be no social justice without economic prosperity, but economic prosperity without social justice is meaningless. So the thrust of this argument is towards what? Social justice. Fine. So I should be first structuring my ideas. So we should be deconstructing. पहला काम क्या है? Deconstruct social justice. अब social justice में भी again two things.
फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिस, सेकंड ऐसे पॉइंट्स बनाने होंगे जिसको देख के आपको आंसर लिखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज जस्टिस. फाइन. तो वी हैव टू डीकंस्ट्रक्ट, ब्रेक करना होगा इसको. तो एक पैराग्राफ जो होगा दैट विल बी एनालाइजिंग व्हाट इज जस्टिस. And in philosophical essays, the formula which I follow, that you raise questions. कितने क्वेश्चंस आप बना सकते हैं उसके आंसर एक एक पैराग्राफ में इफ यू विल राइट, तो वो आंसर बनता चला जाएगा. एंड क्वेश्चंस विल ऑल्सो गिव यू द अप्रोच हाउ यू कैन राइट इन अ सिस्टमेटिक मैनर. So anybody writing an essay here should first understand what is justice. Okay? And the second question should be, what is the importance of justice? Why should we talk about justice? And always do rough work. There is enough time. Rather than writing unnecessary, you should use rough work. Fine. So you should plan it out. As an administrator, planning is important. Fine. So in Britain, it is said that if you don't want to fail, then plan. And if you don't plan, then you are planning to fail. Fine. So plan karna important hai, whether it is an essay or it is pol science answer or any answer. You have to plan it out. You should show your thinking of approaching something. एक एडमिनिस्ट्रेटर के फॉर्म में आपको पहले ये समझना चाहिए कि जस्टिस क्या है, व्हाट इज जस्टिस एंड व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज जस्टिस? Justice is righteousness, fairness. So we will not just give definition just like that. Fine. So we will go for etymological origin, from where this word. You should show some amount of thinking. Then you may be knowing certain ideas of justice. You may be knowing Western ideas of justice. You may be knowing Indian idea of justice. Then roughly what is your idea of justice? Fine. So do some thinking to arrive at what is justice. Now the next thing is social justice. What is social justice? How can we, what is social justice? Huh? So ideas of social justice means what is the purpose and then what is its importance? What is the importance of social justice? What is the importance of social? Why do we need social justice? Huh? No, peace. For maintaining social order. So again, some thinking, and thinking has to be based on some discussions. Fine. Now, whenever you are thinking on social justice, our idea of social justice at present may be in the constitution, but it was not always. So always one angle can be genealogical approach. Fine. So what is genealogical approach? So this term is given by one of the very famous philosopher, Nietzsche, and Nietzsche has given an approach to study morality. So we are talking about justice, ethics, morality. So we also need to understand how the idea of justice has evolved over a period of time. Fine. So maybe in India, caste system was the basis.
patriarchy. But today, the constitutional idea is very different. Fine. So, evolution in the concept of social justice, and go for genealogy of this concept in East, West, and then our societies are evolving, fine, from a localized society. We are today in a global world, more interconnected world. Maybe technology, etc., has made the world is now a smaller place, and we cannot achieve the goals of social justice, let's say in India, until and unless there is global justice also. Okay, so local to global, you can say global, it's global now. So you need to talk about the how, like if I have to achieve social justice, what efforts I need to make, because I cannot solve any problem. No nation can solve any problem simply on, that's why there are platforms like G20 where, or United Nations, where we talk about inclusive growth, sustainable development, etc. So social justice, and finally, what is the picture? Okay. Now, the question is saying there can be no social justice without economic prosperity. Fine. So, you need to understand the relationship between economic prosperity and social justice. So, is economic prosperity important? Most important or the important? Huh? Yes. So I can digress from this issue. Suddenly I didn't thought कि मैंने इस एंगल से सोचा नहीं था, लेकिन अभी जब इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोला जा रहा है, देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, तो वी आर सीइंग जस्टिस इन अ वेरी नैरो सेंस of economic justice. But today, we understand the concept of intersectionality. Fine. So, the idea of justice is not just about economic prosperity, because inequality or injustice, the only criteria is not economic. The criteria is gender also. The criteria is race also, minorities also. So at the initial level, like initially I just thought it is about economic, but suddenly it impacted my mind that no, we can counter that also. Fine. So be open-ended. We are doing rough work. Fine. And maybe this thing, there can be no social justice. Maybe I will say this may be a very narrow view, and we will take into account, and I will see if my idea of intersectionality fits in overall scheme of my essay, or is it making it complex. So I should be doing brainstorming first. Fine. So one question is, economic prosperity in itself will not give everything, because even if like men and women, they are economically from the same class, they may not have the same sense of well-being. Okay. So what is your deeper understanding of justice? Okay. But economic prosperity without social justice is meaningless. So economic prosperity and social justice is important, but, or this happens in humanities.
because sometimes you may think in that direction and don't just do haste कि I will write distributive justice, etc. Because now I am feeling that I will take up this issue to intersectionality. Okay, because seeing justice in that sense itself is too narrow. Okay, so now what I will be, next point is relationship between social justice and economic prosperity. And the point that is being raised here is why economic growth should necessarily involve idea of justice. So you can choose between poor economics and good economics. Fine. So economic growth can be a poor economics. Fine. And maybe the economic policy can't be left on the economists alone. Fine. And then we should also analyze what is the state of economic inequality and what are the implications, what implications are here having, what are the implications of economic growth without distributive justice. Okay, and then finally we will take, like, I will now reconstruct this, and for me economic dimension is very important but not the only discrimination that needs to be addressed. So roughly I have thought that I will bring my essay to this direction. Okay, so now when you saw this topic, your mind was moving in direction of taking intersectionality or just inclusive growth? Inclusive growth. But when you will read again and again, and whenever there are very authoritative statements, because no statement can be correct, especially jab bhi aaye there cannot be anything, then you should always counter. Okay, so explore this dimension. And again, what should be our resource material for this? So any UPSC aspirant should have some data on inequality which can be used in any paper. In political science also you have topic like globalization, the responses in developing and developed and developing country. So concept of, means you should always have data. Fine. So ultimately these are the things which you should have, like, so we will be providing like social justice, the basic material what you require as a resource you will be getting in the form of this PDF. Fine, where some basic things are discussed. You can keep on adding things, means how justice is being thought, etc. But before going there, let us recollect what we know. Okay, so first of all point is, let us think about how will I write a paragraph on justice. Am I clear about justice? So what is justice in your eyes? What is justice and why it is important? So first thing is, what is justice?
Important in the sense why philosophers and especially political philosophers have dealt with the issue of justice. So, can you define justice? You think about what? Just means? Just is proper fitting. It is not necessary everybody know the etymology, but कुछ चीजें जैसे कुछ topics हैं जैसे justice justice you can already prepare, but do you understand how to write on justice? Can you write a paragraph on justice? Then write. हाँ कब किया? कब लिखा दिया? अच्छा, तो क्या लिखा दिया? किसी का लिखा मानना ही नहीं है, खुद से लिख दिया तो तुम लोगों ने लिख रखा है. जस्ट गिव माइक टू समबडी, लेट मी हियर. किसने अच्छा लिख लिया? तुमने लिखा होगा, है ना, तुम लिखते हो, है आपका है. जस्ट रीड इट. इनको माइक दीजिए. अच्छा, उनका हमारा स्टाइल एक ही. ओके. Yeah. Ma'am, justice is the fair treatment to all in delivering their dues according to their ability and capacity. Justice is fair Treatment to all. treatment to all and giving them according to And their delivering resources and opportunities according to their capacities and ability. all agree with this. Then how can you say this is the justice? How are you what makes you so confident this is justice? You can't write like And that. from my perspective, I think fair treatment is one aspect of Nahi, justice. have you tried to critically analyze your perspective? What is the basis? What is the evidence? Why should I accept it? Ma'am, because the main concept of justice is From where have you understood that main concept? I have understood. I have construct my perspective from the textual books. So and from book or your own observation? from books and observations also. Which book? Means we can say from NCRT's political science. So will you, because you have whatever you write, Yes, sir. you write a statement, then you have to give an evidence. Fine. So your thinking should be followed. You cannot write this is justice, that's it, and move on, because that will be very totalitarian and dictatorial. Everybody may not explain justice like that. So मैम हम प्लेटो का जो जस्टिस है वो यूज कर सकते हैं क्या? प्लेटो कोई अथॉरिटी नहीं है. प्लेटो के बाद 1000 थिंकर आ चुके. अच्छा नहीं तो आपने वही तो, आई वॉज सो सरप्राइज्ड दैट स्कॉलर लाइक अमर्त्य सेन आज तक नहीं ढूंढ पाए जस्टिस की डेफिनेशन, एंड यू आर सो कॉन्फिडेंट. दैट इज नॉट द वे टू राइट. आपने क्या लिख लिया? रॉल से नहीं पढ़ना है ना. नहीं, जो लिखना है फॉर्मल सेंटेंस बताएं. हाँ, इन्होंने लिखा है. यस, इन माइक. हाँ, ये तरीका नहीं है. आप फाइनल डेफिनेशन देके आगे नहीं बढ़ सकते हैं. Yes. Ma'am, justice is the architectonical principle on which ideas like equality, liberties are based on. In Indian context, justice, nyaya, is based which means dharma, which नहीं, talks you are about. saying justice an architectonic concept. What is the evidence? मतलब आप किस बेसिस पे कह रहे हैं और why should I agree? And then you are coming at न्याय.
means you are not thinking from your mind. आपने जो पढ़ा है आप उसी के लेकर आगे जाने वाले हैं. That is not the essay paper. दिमाग से सोचिए ना, जस्टिस क्या है, आप कैसे बताएंगे? What is justice? Why should we agree, and how is your definition differ from Plato? आपकी कहाँ डेफिनेशन? ये तो प्लेटो की डेफिनेशन है. जस्टिस प्रोवाइड्स इक्वल डिग्निटी. ये ज्ञान तुम्हें कैसे आया ये जानना है. मतलब आप क्या कह रहे हैं मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस बेसिस पे आप कह रहे हैं. What? Why should I agree it's a state? Always give me logic that it is a state of mind. नहीं, are you satisfied with your definitions? And the thing is, you have to overcome that. You, whatever you know that you don't have, you should know how to tell. Ma'am, justice is the core principle to get the physical freedom. To get Physical freedom also. physical freedom. Fiscal, FIS. नहीं physical. Physical. Why should I agree with this? Is this a Ma'am, conflict? if we are not having a just society, then how can anyone be called freedom, get freedom? If you don't have a just society, how can people have freedom? So justice, but what is justice? It is not so easy ना. Philosophy इतना आसान थोड़ी है कि तुम लोग पता लोगे. कोशिश कर रहे हो, हम तुम्हारी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जस्टिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्लेटो till Amartya Sen, Michael Sandel, they are trying to understand. Still, you cannot have a comprehensive definition. It is very difficult to define. You should write the limitation. You cannot be authoritative in defining justice. कि ये है, मैं समझ गया और मुझे पता है. Finally, truth is bottomless and a borderless. There is no definition of anything. Fine? Ma'am, Yes. can we say justice is a dynamic, contextual and evolving value? वो तो है, उसका नेचर आप बता रहे हैं, डायनेमिक, कॉन्टेक्चुअल, बट व्हाट इज जस्टिस? हाँ, तो तुम लोग तो प्लेटो रॉल्स का दे रहे हो, अपना तो दे ही नहीं रहे. Assistant. हाँ. Justice is a text mentioned in our constitution. No, you can't write like that. No, some people don't believe in natural justice. Actually, justice is nothing. Anything is nothing only. कोई भी चीज कुछ नहीं है. ठीक है. जैसे शास्त्र, क्या यही तो फिलॉसफी है. बीइंग एंड नथिंगनेस, एवरीथिंग इज हॉलो, ट्रूथ इज बॉटमलेस एंड बॉर्डरलेस. कोई भी चीज कुछ नहीं है. जस्टिस कुछ है ही नहीं. एंड यू कांट डिफाइन जस्टिस. That is why Amartya Sen suggests understand injustice rather than justice. So justice or anything, truth is so anything, any concept, it is so vast, so multidimensional that we don't have capacity or ability to define anything. जब हमारे पास ये क्षमता ही नहीं, तो आप डेफिनेशन और अथॉरिटेटिव ला कहां से रहे हैं? दैट इज वेरी टोटलिटेरियन एंड अथॉरिटेरियन अप्रोच, या बहुत ज्यादा नॉन थिंकिंग अप्रोच है. यू शुड, द मोमेंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट जस्टिस, you should feel the problem in discussing justice.
there is a problem in defining anything, क्योंकि कुछ it's all construction of language. Ma'am, can I try this? Abhi, before some time I wrote something. It's very हाँ, बताएं. similar to. So justice is an idea explored through eons, and it is hidden under layers of truth explored by various scholars. We have not reached to we have not reached to a final definition of justice, but we can always take different perspectives on that. ये लिखा था. ठीक है, फिलहाल जब मैंने कहा write about justice, it should not have been so easy for you to write. It is not easy for Amartya Sen to write. So you should write the problem. This is philosophy. ठीक है, तो यही चीज इंटरव्यू में भी है. किसी को कोई आंसर नहीं देना है, आंसर देके तो फंसना है, बोलना ही नहीं है, क्योंकि कुछ बोला जा नहीं सकता है. ठीक है, तो रिगार्डिंग जस्टिस यू कांट स्पीक. इट इज सच अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन फिलोसफी, एंड देयर इज नो एंड टू फिलोसफी. न्यू फिलोसफर्स विल कम, दे विल कीप ऑन राइटिंग ऑन जस्टिस. तो आप ऑनेस्ट नहीं है अपने आंसर में, और आपका एटीट्यूड गलत है कि आप लिखी लिखाई, ये तो एनसीईआरटी की बातें करते हैं. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? लिखी लिखाई, पढ़ी पढ़ाई. आप ओरिजिनल थिंकर होने चाहिए. अगर मुझसे इफ somebody had asked me to talk about justice, I would have first expressed, I will say I multidimensional, this, that. You can say that it is not possible to define justice, and you learn expression, you learn language, style होना चाहिए. तो ये irony है. Irony is the philosophy begins with the discussion on justice, and the irony is we have not reached to any conclusive definition of justice, and therefore it is very difficult to define justice. What is justice? Fine. It is so difficult because the truth is so vast, multi-dimensional, and bottomless and borderless, that defining anything is just impossible. Or defining, इनके पास जाइए, defining anything with इतना आसान नहीं है कि आप आके बिल्कुल बता दें. तुम्हें यही बताना है कि नहीं पता है, लेकिन नहीं पता को ऐसे बताना है कि लोगों को अच्छा लगे. तुम्हारी खुद का यही आना चाहिए. कौन तुम प्लेटो और सोक्रेटिस या रॉल्स या अमर्त्य सेन हो कि तुम बताने लग जाओगे? तुम यही तो समझोगे 10 थिंकर मैम ने पढ़ाए, आई एम कंफ्यूज्ड. तो फाइनली आप कंफ्यूज्ड हैं जस्टिस को लेके, और क्या हो सकता है. लेकिन इतना पता है कि justice is a desire in human mind. We all aspire for justice. We want justice. Fine. So defining is difficult, but there are different people, they have defined in this way. थोड़ा style लाना है. ठीक है. Yes. Ma'am, isn't it an art of balancing justice? Art of balancing. Why should I agree? And I'm asking you. Any definition is always one dimensional, and you cannot give definition. ठीक है, डेफिनेशन ही ये आप ये बोलिए, क्वेश्चन ही गलत है अगर हम आपसे कहें डिफाइन करो. अगर हम तुमसे कहें लिबर्टी डिफाइन करो, तो कोई डिफाइन थोड़ी कर सकता है. डेफिनेशन नहीं है मैम, डेफिनेशन नहीं है, ये एसेंस समझ में आया मुझे कि जस्टिस इज एन आर्ट ऑफ बैलेंस. एसेंस आपको समझ में आया टुडे, मे बी टुमारो यू विल कम अप विद डिफरेंट डेफिनेशन, एंड दिस वर्ड इज अ वर्ड ऑफ चेंज. So definitions will keep, that's why there is no beginning, no end.
Ma'am, can we say justice? Still it is important. And so we are working with certain ideas of justice rather than a definition of justice. Ma'am, Yeah. can we say justice varies from person to person? Means Yeah, different. everything vary from person to person. If something is, you can't reach to any definition. जो भी definition होगी one dimensional है. ठीक है. Yeah, ma'am, तो means आप लिमिटेशन, अपनी लिमिटेशन लिखिए और मन से लिखिए. यही वो पेपर है जहां दिल से लिखना है कि भाई नहीं आ रहा समझ में. इट इज डिफिकल्ट थिंग एंड दैट इज कॉल्ड स्टाइल. स्टाइल ऑल्सो मैटर्स ना. लर्न द स्टाइल ऑफ टॉकिंग अबाउट समथिंग. ओके, पहले सुनना है. अब तुम्हारे स्टाइल में ये भी हो सकता है इट इज सो ट्रूथ इज बॉटमलेस बॉर्डरलेस. लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो एक स्टाइल, जैसे ऑन द ओकेजन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, सो एडमंड बर्क, एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन इज लिंक्ड विद social justice. So Edmund Burke said something happened, the fall of Bastille, something happened in France where it is very difficult to define and it is very irresistible to remain silent also. ठीक है, कि जस्टिस भी वही चीज है कि उसको समझाना बहुत मुश्किल है लेकिन उसके बारे में नहीं कहना ये भी इररेसिस्टिबल है. तो क्या सीखना है? स्टाइल. ठीक है, राइटिंग इज यहां पर जीएस में आपको आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए लेकिन यहां पर एक स्टाइल है. तो स्टाइल में फाइनली क्या है आपके पास? यू डोंट हैव अ डेफिनेशन, यू कांट क्लेम अ डेफिनेशन. ठीक है, एंड इट इज सच अ आयरनिकल थिंग कि इतने ग्रेट माइंड्स started and we are yet not, you express your limitation. आ गया समझ में? तुरंत अथॉरिटेटिव होके नहीं देना है. देना कुछ नहीं है, बस बेवकूफ बनाना है. बेवकूफ बना लिया मतलब पब्लिक लाइफ में सक्सेसफुल है ना. चलो, अब तुम जब जस्टिस है तो तुम्हारा क्लू लिखो. व्हाट इज द क्लू? क्लू में ये राइट दिस क्लू. डोंट जंप ऑन कंक्लूजन्स. think how to make people fool in which they feel good. Don't jump to any conclusions. और next है learn the style of telling about certain things. अब हम स्टाइल पे जा रहे हैं. ठीक है, और हमारा फाइनल कंक्लूजन ये क्या है? हमारा कंक्लूजन अपने दिमाग के लिए आई कैन नॉट डिफाइन. अरे नहीं, अपनी थिंकिंग में लेके आना है कि नहीं डिफाइन कर सकते. इंटरव्यू में बता दिया जाएगा. ठीक है, डिफाइन नहीं मतलब हमको ये सेंटेंस बताना है कि आई कैन नॉट डिफाइन. नाउ आई हैव टू थिंक हाउ विल आई टेल दिस. हमें बस यही बताना है. ठीक है, तो अब जैसे लिखो एडमंड बर्क, द फेमस ब्रिटिश फिलोसोफर या इंग्लिश फिलोसोफर, comma, at the time of fall of Bastille, Bastille, remarked that something has happened regarding which
nothing can be talked about with certainty. Yet it is simply irresistible to keep silent. Means don't speak. ठीक है? अब हम सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसी में हम 10-15 लाइन लिख देंगे कि हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है? ओके, तो अब इसी के बाद हमें क्या लिखना है? अब लिखो, द बर्क्स स्टेटमेंट इज अ रिमाइंडर of the irony that since the beginning of civilization, whether in East or West, comma, not just intellectuals, but even the common man has been talking about justice, comma, yet even in 21st century, we are nowhere near to any conclusive definition of justice. ठीक है? अब लिखो, while admitting the limitations of human mind, towards comprehending the idea of justice, comma, we have to acknowledge that humans always felt the necessity to deliberate on justice. ठीक है? आप लिखो, मतलब this is something that we do deliberate on justice. This itself shows how important the idea of justice is. लिखो, in fact, the exploration of the concept of justice in itself the starting point of the philosophy. Full stop, right? Among various normative ideals
like liberty, rights, equality. Justice enjoys which type of position? Tell me the word. फाउंडेशनल उठते नहीं ना उससे ऊपर जो बताया है. हमेशा ये सोचो मैम ने जो बताया वही नहीं, मैं कुछ और बोलूंगा. चैलेंज करो. क्या लिखा है हमने? Various normative ideals like liberty, rights, and equality, justice enjoys. A highly exalted position. और घर पे जाके जो जो वर्ड्स तुम्हें लगते हैं अच्छे हैं हम आगे यूज करेंगे उसका एक वोकैबुलरी बनाइए. ठीक है. अ हाईली एग्जॉल्टेड पोजीशन. एग्जॉल्टेड बहुत रिवर्ड पोजीशन है. ठीक है. ये इसकी महत्व है. जिसने ये टॉपिक दिया है उसका रेस्पेक्ट दिखाओ कि भाई आपने बहुत सही टॉपिक ढूंढ के एग्जाम में पूछा है. हमें तो यस एग्जॉल्टेड. एग्जॉल्टेड मीन्स बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल या बहुत सारा डिवाइन टाइप. एग्जैक्ट मीनिंग तो क्या है? एग्जॉल्टेड मीन्स वेरी रिस्पेक्टफुल. व्हाट? रिवर्ड. हाँ समथिंग. तो ऐसे वर्ड्स वोकैबुलरीज. अब जैसे एग्जॉल्टेड पोजीशन है तो इसके सिनोनिम्स भी याद रखो. कहाँ कि जस्टिस इज अ वेरी एग्जॉल्टेड. बट नाउ you have to give the evidence. On what basis I am saying very exalted? और अभी हम क्या करें? I am just giving an introduction. एक होता है ना कि आप समा पहले बांधिए. ठीक है. आप पहले माहौल बनाइए. फाइन. एक सिंगर you should write like a melody. फाइन. You should first create an environment. ठीक है. किसी भी चीज को लिखने से पहले माहौल या एक समा पहले बांधिए उसका. उसको एकदम चने की झाड़ पे चढ़ा दो. एग्जॉल्टेड. क्या क्वेश्चन बीच में लिख देना लास्ट में. भाई मान गए क्वेश्चन तुम बढ़िया लाए ढूंढ के. यू रियली डिजर्व टू बी एग्जामिनर इन यूपीएससी. ऐसे लिख सकते हैं ना. क्यों नहीं लिख सकते? एग्जॉल्टेड. अब एग्जॉल्टेड है बट हाउ विल यू सब्सटैंशिएट? एविडेंस क्या है? exalted. ठीक है. everything you should speak you should have a reason. ठीक है. लिखो exalted position to the extent that it is always it is seen as a divine idea. Comma associated with gods. ठीक है. Now, whenever we talk about God, we always talk about justice. Fine. So it is a divine idea. It's a very pure, sanctified and a different level को हम उसको respect करते हैं. ठीक है. तो it is a very exalted, it is considered as divine and to the extent that God and justice is synonymous. Fine. So there are religions where you take it in a synonymous manner that the God does justice. Fine. It is such a divine. ठीक है. क्या लिखा है लास्ट लाइन? गॉड. ठीक है. वो भी गॉड में गॉड को आप जस्टिस का सिनोनिमस मान लेते हैं. गॉड तो परफेक्शन है. बहुत चीजें हैं गॉड. लेकिन जैसे ही गॉड ध्यान में आता है तो जस्टिस, गॉड का काम ही जस्टिस है. ठीक है. गॉड विल बी देयर ऑन डे ऑफ जजमेंट. जजमेंट, जस्टिस, इट्स वेरी डिवाइन टाइप ऑफ एन आइडिया. तो गॉड बड़ा की जस्टिस. जस्टिस. Because of justice, God is God. Have you understood this? Because
if a God does injustice, will you consider God as God? तो ये आप कितना उसको भाव दे रहे हैं, और वो स्टाइल है। हमें क्या पता गॉड बड़ा है या कौन बड़ा, लेकिन हमें जो सामने मिल गया, ठीक है। जस्टिस इज गॉड नहीं, टू द एक्सटेंट God and justice is synonymous, and it is capacity to do justice that makes God God. God needs to do justice. Justice may exist without God, and any God that doesn't do justice may lose its position. ये बढ़ाओ ना, ऐसे हवा दो। अरे कुछ नहीं, हम जो कह रहे हैं हम कुछ सोच नहीं रहे, लेकिन हमारे सामने कोई भी आ जाए उसके लिए हम ऐसी ही बातें करेंगे कि भाई बाकी लोग क्या, जो तुम हो मेरे लिए, ऐसा। ठीक है, यस। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, हमें भी आपके जैसे बनना है, मतलब आप जिस तरीके से नेचुरली बोलते हो या फिर एक्सप्रेस करते हो, मतलब यही क्वेश्चन मुझे आया है यहाँ पे। आपको हमारे जैसे बनना मतलब नहीं ऐसा कि आप जैसे नेचुरली अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, नेचुरली फ्री काम रहते हो, हमें ऐसे बनना है ताकि तो वो देख के बनेंगे ना। अच्छा देख अब तुम हमें चढ़ा रहे हो, हाँ? सही पकड़े हैं, हाँ? मैं इसके लिए आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। मैं बहुत सारे टीचरों से पढ़ा, पर आप जितना नेचुरली पढ़ाते हो और जितना लाइफ यही सुनना था, जितना यही तो बोलना है। यस तुम जितना आप नेचुरली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाते हो ना, मैंने अभी तक इंडिया में अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में नहीं देखा। क्योंकि हम कुछ सोच के नहीं पढ़ाते हैं, फाइन। हम आते हैं और कैसे अप्रोच नेचुरली जाते हैं उसकी तरफ। मैम आपसे सीख के हमने क्लास में भी ये करना चालू करा, पर टीचर बोलते हैं कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। हमने कहा आप सिलेबस कंप्लीट करो, हम जिंदगी कंप्लीट करेंगे अच्छे से। यही तो ऐसे क्लास है, वही मैंने कहा ये पढ़ाई नहीं है, ये आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, आपकी सोच। यस, बस सोचना है। अब चिट्ठी भी देने लगे, क्या हमारी उम्र क्या तुम्हारी उम्र, लेकिन चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है। Justice is the idea explored through it is hidden under layers of truth constructed. ठीक है, आप ये क्यों दिया है, मतलब वेरी गुड किसने लिखा है, इन्होंने। चलो आप ऐसे सुनो, क्या क्या लिखा है हमने लास्ट लाइन। गॉड टू द एक्सटेंट, ऐसे लिखो, टू द एक्सटेंट इट बिकम्स सिनोनिमस with God means when we think about God, the very first idea that comes to mind is idea of justice. So what I am doing, how much you can, even if you have to just write on justice, can you generate ideas? Fine, ability to generate ideas and learning the skill of communication. फाइन। तो तुम्हारे दिमाग में जब भी हमने जस्टिस की बात की तो कहीं ना कहीं भगवान, देर है अंधेर नहीं है, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस। तो अब ये बड़ी बड़ी बातें करने के बाद तुरंत जमीनी बातें करनी होती हैं, ठीक है। जैसे आपकी स्पीच में डिफरेंट पिच होने चाहिए, ठीक है। आप एक ही उसमें बोलते रहोगे तो बोरिंग हो जाएगा। तो ऐसे बड़ी बातें करने के बाद स्टिल वी नीड सम वर्केबल थिंग टू मूव ऑन।
Fine. So accepting the limitation is still, we require some workable definition to begin with. And whenever you talk about workable definition, you talk about some common sense understanding of justice. So the nearest word with which we can start understanding justice, and majority of the scholars have tried to define, is fairness. ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, इधर उधर की बातें. अब एक आ जाओ जमीनी बात पे. ठीक है, तो अब हमको कुछ तो वर्केबल डेफिनेशन चाहिए. ओके, तो अब ऐसे लिखो क्या, थिंक अबाउट सम वर्केबल डेफिनेशन. और हमेशा कॉमन सेंस वाली बातें लिखनी है ऐसे में. ठीक है, अब फिर लिखो, येट डिस्पाइट द लिमिटेशंस, in order to proceed with the issue of social justice, we have to begin with the common sense based understanding. That is how majority in general understands justice. तो ऐसे में थोड़ी जेनरिक रखो चीजें, कॉमन मैन है ना, हाउ मेजॉरिटी इन जनरल. ठीक है, तो हाउ मेजॉरिटी इन जनरल अंडरस्टैंड्स fairness, but that is also, how do you get to know? On the basis of the different prominent intellectuals, the commonly, this is how defined. तो आपने किस, हम हर बात का एक एविडेंस होना चाहिए, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं, on what basis. ठीक है, क्या लिखा है, justice. ठीक है, comma, looking at the prominent persons exploring the idea of justice, like Plato, Aristotle, Rawls, Amartya Sen, and others. The nearest term relatable with the idea of justice is fairness. Primarily, when we talk about social justice, fairness social justice का हिस्सा है. Or morality, when we talk at individual level. ठीक है, अब फेयरनेस को बॉक्स में रखो, मतलब हमेशा, लेकिन तरीका बताने का सीखना है. आपको भी पता है जस्टिस एज फेयरनेस, तो हमेशा लिमिटेशन के साथ बताया जाता है. ठीक है, नाउ सिंस it is not required that you should mention about Amartya Sen, but almost everybody reads, so we can bring forward
that here, जैसे here it is worth mentioning Amartya Sen, who suggests a way out when he says that instead of attempting to define justice, which is vast, complex, and highly contestable, we should rather begin understanding injustice. ठीक है, तो अगर नहीं भी पता है, लेकिन अमर्त्य सेन की ये बात लगभग सबको पता है, और तो हम लोग इसको लिख सकते हैं. आपके ऊपर है, लिखिए चाहे आप ना लिखिए. क्या नहीं, हाँ वही तो है. मतलब यू हैव टू टेल इन योर आंसर दैट हाउ यू आर गोइंग टू सी, बिकॉज एनीथिंग कैन बी इंटरप्रिटेड इन एंडलेस वेज. लेकिन मेरा आंसर, मेरा पर्सपेक्टिव किस ढंग से देखा जाए. तो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल जस्टिस, यू हैव टू टॉक अबाउट फेयरनेस. ये सबसे जेनरिक मीनिंग है, और हम उसमें हम ये मान के हमने कहा कि भाई मैं गलत, आई मे बी रॉन्ग, बट टू बिगिन विथ समवेयर यू हैव टू स्टार्ट. वी विल स्टार्ट विथ फेयरनेस. दिस इज हाउ अ कॉमन सेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग. तो हमने कोई चीज अथॉरिटेटिवली नहीं बोला कि यही होता है जस्टिस. आया समझ में? हाँ, कॉमन मैन के लिए भी फेयरनेस है लगभग. इसीलिए आपका इम्पल्सिव डेफिनेशन क्या है जस्टिस की? फेयरनेस. ठीक है, लेकिन आप जस्टिस एज फेयरनेस पे कैसे पहुंच रहे हैं, ये आपका ऐसे का स्टाइल है. क्योंकि आप एक कॉमन मैन नहीं है ना, आपने उसमें पढ़ाई की है. आपकी अप्रोच क्या है, आपकी अप्रोच वहां तक पहुंचने की कैसे, वो अप्रोच मैटर्स. स्टाइल मैटर्स. स्टाइल पे ध्यान दो. ठीक है, तो उससे ही फर्क पड़ जाता है ना. बात तो हर इंसान करता है, लेकिन गालिब का ख्याल जो भी है वो अलग है ना. तो स्टाइल से तो इंसान बड़ा बनता है. तो उस चीजों को बोलना, अब इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमने बता दिया मुश्किल है, लेकिन हम अब एक वर्केबल डेफिनेशन ले रहे हैं रादर देन एनी अथॉरिटेटिव डेफिनेशन. और नॉर्मली व्हेनेवर कॉन्सेप्चुअल वाले आए, आप इसी स्टाइल के आसपास आगे बढ़ें. तो जस्टिस एज फेयरनेस एंड इन इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, अब जैसे व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, व्हाई जस्टिस इज इंपॉर्टेंट, तो हम ये नहीं कह सकते कि जस्टिस इज इंपॉर्टेंट फॉर पीस एंड हार्मनी. ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना है, क्योंकि हर चीज हम एज्यूम करते हैं. तो इट इज एज्यूम्ड. ऐसे क्वालिफाइंग वर्ड्स लिखने इंपॉर्टेंट है. ऐसा माना जाता है कि जस्टिस होने से पीस, हार्मनी. तो ये वर्ड्स का वैल्यू है. इज दिस क्लियर? तो ये जो फॉर्मेलिटी है, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है. ठीक है, तो अब हमने जस्टिस को एक वर्केबल डेफिनेशन में आ गए. फेयरनेस एंड नेक्स्ट ऐसे लिख सकते हैं, राइट द इंपॉर्टेंस concept of justice gets because it is assumed that it is a precondition for, किसकी प्री कंडीशन है? पीस, स्टेबिलिटी. लेकिन जब वो होगी तो अपनी ग्रोथ. ठीक है, इट इज अ प्री कंडीशन फॉर पीस, ऑर्डर, हार्मनी, प्रोग्रेस. as well
progress of the society at large as well as the individual. यहां पे assumed word तुम लोग को कम इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको सर्किल करके रखो, इसको यूज करेंगे जब भी बोलेंगे, assumed करके बोलेंगे। ठीक है, क्या लिखा लास्ट लाइन? फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसका एक कॉमन सेंस हम मतलब लेके चल रहे हैं। इसीलिए अब चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बट एवरीबडी स्टडी आर्किटेक्टोनिक प्रिंसिपल, तो हम उसको रेफर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे लिखो, इट इज वर्थ वाइल टू मेंशन हियर that Plato who is regarded as father of political philosophy considered justice as architectonic principle and even architectonic principle and even जॉन रॉल्स। ठीक है, अब इसको हम इंपॉर्टेंस बनाए दे रहे हैं। ठीक है, देखो, हु एंजॉयज द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर of 20th century। अब ब्रैकेट में ऐसे एविडेंस लिख दो, बिल क्लिंटन। held that justice is the first virtue of any social system, just as truth is the first virtue of any system of thought। ठीक है, now after this you change the paragraph when you have to talk on something else। ठीक है, तो we have to talk about the interlinkages between social justice and economic prosperity। ठीक है, तो अब यहां पर अपने लिए क्लू लिखो कि अब डिस्कस क्या करना है। इंटरलिंकेजेस बिटवीन, काइंडली टेल हाउ टू बिल्ड द स्टाइल एंड एक्सप्रेशन। यही सुन के ही आएगा ना, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा ना वैसे सुन के, वरना बाय रीडिंग यू लर्न। पेपर इसीलिए कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है, या तो आपको ऐसे कोई मतलब यूपीएससी में आप नॉन फिक्शन को अपनी हॉबी बना लो, बिकॉज कैसे आता है, रीड करके ही आता है। फाइन, सो जैसे यू कैन रीड, बिना रीडिंग के नहीं आएगा ना, आइडिया विल कम थ्रू आइडिया। फिलहाल सुन के आएगा जब हम लोग ये थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो अपनी हॉबी बना लीजिए नॉन फिक्शन बुक्स। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे पढ़ो, इसीलिए हम कहते हैं सोने से पहले 1-2 पेज पढ़ के सो, तो उसका आपका बहुत
फिनोमिनल ग्रोथ होगा, अर्थमेटिक नहीं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ग्रोथ होगा अगर आप पढ़ेंगे। ठीक है, यू कैन रीड पुअर इकोनॉमिक्स, यू कैन रीड एनी बुक, इंडिया का लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन डेल रिम्पल उनकी कोई भी किताब पढ़ेंगे उससे अपने आप ही वो हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पहुंचे हम? ये इस पर हमको सोचना है। ठीक है, लेकिन अभी हमने सोशल जस्टिस बहुत क्लियर नहीं किया। ठीक है, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि सोशल जस्टिस, एग्जामिनर शुड अंडरस्टैंड हाउ आई एम इंटरप्रेटिंग। ठीक है, तो सोशल जस्टिस की हम क्या वर्केबल डेफिनेशन लेके आगे बढ़ेंगे वो हमें बताना जरूरी है। यही फिलॉसफी है कि आप उस कंसेप्ट को कैसे समझते हैं। ठीक है, तो अब इसको कनेक्टिंग लाइंस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कहने का एक कनेक्टिंग लाइन, हम कैसे किसी, आई शुड नॉट ब्रेक एनी रीडर्स फ्लो ऑफ रीडिंग, तो कनेक्टिंग लाइन्स हमको चाहिए होता है। ठीक है, तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, और जो चीज आपको कम इंपॉर्टेंट लग रही है, एजम्पशन, बिफोर, आफ्टर, यही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब चलो ऐसे सीखो, लिखो लिखो बिफोर exploring the relation between social justice and economic prosperity, it is worthwhile to understand the concept of social justice. Right, right, since it is assumed that, since, assume, यही सब वर्ड इंपॉर्टेंट। ठीक है, since it is assumed that man is by nature a social animal, comma, it is very natural to deal with or to interrogate the concept of social justice. ठीक है, अंडरलाइन कर दो, इंटरोगेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। क्या है सोशल जस्टिस, या तो आप एकदम डिफाइन कर दीजिए, बट फिर उसमें पढ़ने में मजा नहीं आएगा, है ना। तो कैसे हम इसको, अब हम इसके लिए एक जीनियोलॉजिकल अप्रोच लेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाउ philosophers have defined social justice, what has been the notions of social justice. ठीक है, तो ये अब अपने लिए क्लू लिखो, क्या सोचना चाहिए हमें, हाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम philosophers have explored the idea. अंडरलाइन करो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब यूसेज किया करो कि वी नीड अ जीनियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, जीनियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। अब ये बहुत कॉमन शब्द होता है, आप किसी भी अच्छे राइटिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, और नॉर्मली कैसे किया जाता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कॉन्सेप्शंस को
लेके जाना है। ठीक है, तो अपने क्लू के लिए लिखो मेंशन, कुछ आइडियाज मेंशन करने, आइडियाज फ्रॉम बोथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो आप कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई कॉमन पॉइंट है या जितना जाना है मतलब उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, अब फिर हम कैसे उसको लिंक कर रहे हैं जिससे फ्लो आता है। ओके, तो ऐसे लिखो राइट सिंस intellectuals have explored the idea of justice from beginning, it is essential to take the genealogical view of how this idea has evolved. किसने पूछा था हाउ टू बिल्ड स्टाइल? तुमने, हम भूल ही गए, वहां पे बताना था। स्टेट क्राफ्ट पढ़ती हो? यू नो अबाउट माई मैगजीन, उसमें भी तुम्हें आएगा। यही तो, यही भूल ही गई थी। दैट वाज, हाँ क्या, हाँ मैंने कहा ये आई थिंक वो पढ़ सकते हो बिकॉज तुम्हारा आईआर से भी संबंध है और अभी इंटरव्यू के लिए तो काफी फायदा है। मतलब कुछ ना पढ़ो तो स्टेट क्राफ्ट तो पढ़ो ही। यस, वही तो कह रहे हैं। हाँ मतलब आई हैड अ मतलब अपॉर्चुनिटी फॉर मार्केटिंग, आई जस्ट फॉरगॉट। ठीक है, चलो, तो क्या लिखा है लास्ट लाइन? जीनियोलॉजिकल व्यू। तो अब पहले ईस्ट का लिखना है कि पहले वेस्ट का? ईस्ट का नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि ईस्ट में आपको बहुत डेफिनेटिव आइडिया नहीं मिलते, है ना। तो ईस्ट को थोड़ा ऐसे हल्के से टच करना है और एक्नॉलेज्ड नहीं है ना, तो आपको एक्नॉलेज तो वेस्ट का ही है जिसमें आप प्रोमिनेंट लोगों को आप समझते हैं। तो यहाँ पर ईस्ट के आइडियाज बहुत प्योर फिलोसफी, मतलब इन ईस्ट social justice is a subject matter of political philosophy. So in east you don't have political thinking, it is more spiritual या religion based ideas हैं, एशियन वैल्यूज हैं, कन्फ्यूशनिज्म से हमें मिलता है। ऐसे कोई टेक्स्ट नहीं है लाइक प्लेटोज रिपब्लिक। तो आपके दिमाग में इट शुड बी वेरी क्लियर दैट why I am starting and giving greater thrust on Western works rather than Eastern. But Eastern को भी हम थोड़ा टच करके, ईस्ट में हमेशा उसको ड्यूटी और इस रिलीजन्स में है, ईस्ट में फिलॉसफी में नहीं। ठीक है, हालांकि इन इंडिया देयर इज अ फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन नोन एज न्याय, but that nyaya is not specifically the social justice which we are talking about, that is on judgment and other things. ठीक है, तो ये सब चीजें, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप कितना केयरफुल हो, कितना सिलेक्टिवली और स्पेसिफिकली आप चीजें कर रहे हो। ओके, हो सकता है देयर कैन बी एनी टॉपिक वेयर ईस्ट नीड्स मोर एम्फेसिस। ओके, तो जीनियोलॉजिकल व्यू। अब ये हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो ऐसे लिखो, द फर्स्ट मेजर टेक्स्ट where the idea of social justice has been explored is Plato's Republic. Where Plato
held that state is individual writ large. Writ, W-R-I-T, writ large. Why I am mentioning this? Because Plato says that social justice has to be based on the idea of justice present in human soul. And that is why he talks that a society to be divided into 3 classes. That is social justice. ठीक है, कहाँ लिखा है हमने? In state is individual writ large. इसको थोड़ा ठंडा मतलब गर्म हो रहा है. State is individual writ large. ठीक है, तो इसमें लिखो right. लिखो as he believed that justice in the state has to be reflective of the idea of justice found in human soul, comma, soul. Accordingly, he creates, accordingly, in his views, a just society is where people are performing the roles according to the spiritual qualities of their souls, comma, the outcome of such an arrangement from perspective of Plato is, क्या है आउटकम सोसाइटी अगर जस्ट हुई? is peace, harmony and excellence. Do you peace, harmony and excellence? Now, is there anything in Plato's idea of justice which you really find appealing? अगर प्लेटो के आइडिया ऑफ जस्टिस से आपको कुछ वैल्यूएबल लगा तो क्या? कोई चीज अच्छी लगी जिसने भी प्लेटो पढ़ा है? क्या? जो प्लेटो की सबसे बड़ी बात क्या है? पीस वीस छोड़ो, जिसके ऊपर हमको जाना है, क्योंकि सोशल जस्टिस क्या है? गिव एंड टेक. ठीक है, तो प्लेटो की 2 बातें आपको, जिसके बारे में भी कुछ कह रहे हैं, तो क्या खास बात आपकी नजर में क्या मेन है? तो 2 थिंग्स, हिज एम्फेसिस ऑन ड्यूटी. ठीक है, ड्यूटी एंड हिज एम्फेसिस ऑन interdependence. Fine. These are the 2 things that you should bring from your side. Now, why should you bring this from your side? Because somewhere when they are talking about economic prosperity without social justice does not carry value. So it is expecting that those who have lot of wealth, they should be giving it for the benefit of the least advantaged. तो ये वैल्यू आपने उसकी हर बहुत बुराइयां हैं, लेकिन आपकी नजर से प्लेटो में व्हाट इज वैल्यूएबल ये लिखिए. तो 2 चीजें आप एज अ ड्यूटी
बिकॉज गांधी या सबका जो कॉन्सेप्ट है वो ड्यूटी बाउंड है, हमारा धर्म का कॉन्सेप्ट ड्यूटी और इंटरडिपेंडेंस। तब हम उस माहौल में ले जाएंगे कि प्रॉस्पेरिटी शुड नॉट रिजल्ट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। आया समझ में? क्या चीज आपको प्लेटो में खास लिखी? ठीक है, तो अब ऐसे लिखो, द 2 points which hold huge appeal in Plato from my perspective। आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। From my perspective is the idea of duty, ऐसे ए लिखो, ए बी, ब्रेक करो मोनोटोनी। ए, idea of duty, and B, interdependence। Up next scholar which is often quoted whenever you talk about justice is Aristotle। ठीक है, तो why are you writing Aristotle's idea not randomly? आप नेक्स्ट डिस्कस करें एरिस्टोटल का आइडिया, लेकिन ये भी बताएं माय सिलेक्शन इज नॉट रैंडम, इट इज रीजनेबल। तो रीजनेबल क्या है कि नो डिस्कशन ऑन justice is incomplete without touching Aristotle's idea, because Aristotle's idea of justice is present in almost all modern constitutions in one or the other form. And from the perspective of public policy, Aristotle's idea is all the more significant because he links the question of justice, inequality, revolution, and talks about and gives this principle. What is so special in Aristotle? 2 things. He says it is unjust to treat equals equally and unequals unequally. At the same time, what is the best thing that you like about Aristotle? What is justice? See, discussion on justice, if you have read ethics or philosophy, you talk about 2 prominent scholars. One is Rawls and his communitarian critics like Sandel. So one theory of justice is universalist and another theory of justice is particularist, contextualist. So Plato is universalist and Aristotle is contextualist. So Aristotle says justice, what is justice, will not be defined by a philosopher king, but ordinary citizens. They will be coming together and deliberate. So he is taking into account the contextual notions of justice. Fine. So when you will give your own idea of justice, you will go for that we need some universalism as well as some contextualism. So people like Amartya Sen, capability approach is what? Capability approach is taking into account, it's a realization focused thing, taking into account special circumstances. So entire Western philosophy is nothing but footnotes. ठीक है, तो आगे तो हमको प्लेटो, अमर्त्य सेन, इन्हीं सब में जाना है, लेकिन इन सब का बेस तो यही है। तो एरिस्टोटल में आपको क्या खास लगा आपके पर्सपेक्टिव से? हाउ ही टॉक्स अबाउट द वे वी शुड अराइव एट जस्टिस। व्हाट इज जस्टिस?
social justice. It should be based on consensus. It should be the product of collective deliberation, and it should take into account the culture and the tradition. क्योंकि तब जा करके हम सोशल जस्टिस का ये आंसर तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की ही बात कर रहा है, हम इंटरसेक्शनैलिटी में ले जाएंगे, या जस्टिस पे हमें कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करना है तो हमको ये डायमेंशन सोचने हैं, और हम केवल फिलोसफिकल डायमेंशन सोच रहे हैं। फिलोसफिकल ऐसे में फिलोसफिकल डायमेंशन सोच रहे हैं, फिलोसफिकल ऐसे में ज्योग्राफिकल डायमेंशन थोड़ी सोच रहे हैं। लेकिन तुम लोग सोचोगे ज्योग्राफिकली दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेस्टल अप्रोच क्या होती वो, हम आज तक पूरा फुल फॉर्म ही नहीं जाने, हमने क्या कोई जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक। तो भाई फिलॉसफी में इतनी बातें इसको करने के लिए, ठीक है। तो एरिस्टोटल आपने सिलेक्ट किया, बट क्यों किया आपने, उसमें क्या बात ढूंढी, आप क्या लेते जाओगे, तो हम उस चीज को पर्सनलाइज करते चले जा रहे हैं। वही ऐसे है, जब ऐसे लिखिए तो ऐसे लिखिए, ठीक है, ऐसे लिखोगे तो ऐसे में मार्क्स आएंगे, कुछ और लिखोगे तो मार्क्स भी कहीं और जाएंगे, ठीक है। तो अब चलो नेक्स्ट का क्या आ गया, एरिस्टोटल का लिखना है। अब स्टाइल देखो क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। तो फिर स्टाइल, स्टाइल जहां पे स्टाइल चल रहा है वहां स्टाइल लिख दो। तो काम की बातें कुछ नहीं चल रही, स्टाइल चल रहा है। और स्टाइल हमने सीखा कहाँ से, मोदी जी से, हमारे सीनियर है। तो ना आर्ट्स फैकल्टी में मिलते थे तो फिर मोदी जी ऐसे बताते थे बच्चों, हैं? अरे नहीं, मोदी जी ऐसे वहां पे आते थे एज अ सीनियर, हम लोग ऐसे कभी फेयरवेल हुआ तो फिर, हाँ, स्टाइल होने का, सक्सेसफुल होना है लाइफ में तो स्टाइल होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब स्टाइल सीखो, स्टाइल, आज का क्लास स्टाइल पे है, ठीक है। आप स्टाइल, स्टाइल वाले शब्द समझो, ठीक है। लिखो, लिखो, नो डिस्कशन on justice can be completed without mentioning Aristotle's idea. अब आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया, उसका लॉजिक दीजिए, ऐसा क्यों, क्यों आपको क्यों लगता है इनकम्प्लीट होगा। लिखो, राइट, सिंस या बिकॉज देयर इज हार्डली any constitution in our times, yeah, in modern times, which does not take the reference of proportionate justice given by Aristotle, लिखो, his oft quoted, OFT, oft quoted statement is dash करके, it is unjust to treat equals unequally, डॉट डॉट डॉट, जो सबको पता होगा, या जिसको नहीं पता है तो वो कंप्लीट है कि इट इज अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली एंड अनइक्वल्स इक्वली, या इट इज इक्वली अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली, ठीक है। अब इसकी एनालिसिस करो, व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट, ठीक है। लिखो, फ्रॉम एरिस्टोटल
right? Certain discernible, discernible, discernible points are, first लिखो, the linkage between justice and merit, next, the linkage between stability and inequality, next, a more down to earth idea, which is contextual and derived collectively. ठीक है, अब हम एकदम जंप लगा जाएंगे और रॉल्स वॉल्स को लिख जाएंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो. इन कंटेम्परेरी फिलॉसफी, no discussion on justice can be treated as just if we ignore John Rawls. Right? Rawls defined justice in terms of the three principles. अब लिखो A, liberty principle, next, equality principle, and next, difference principle, comma, which he together calls as fairness. Now, what is uniqueness of Rawls? Economic inequality he addresses. And what do you like in Rawls? He is not just talking about justice, or what you like, his concern for the least advantaged. ठीक है, तो हर की किस, आपने इन्हीं राइटर्स को अपने में स्पेस दिया, बाकियों को नहीं दिया, तो उसका लॉजिक दीजिए. ठीक है, तो अब ऐसे लिखो, राइट, रॉल्स deserve a special recognition because of his emphasis on A, the principle of equity, and B, his concern for the least advantaged. Comma, an idea comparable to Gandhian idea of Antoday, an idea comparable to Gandhi's idea of
अंत्योदय, unto this last, अंत्योदय, अंत्योदय, सर्वोदय, ठीक है, वो कहाँ मिलता है आपको? अंत्योदय, कॉमा, इंस्पायर्ड बाय जॉन रस्किन्स, इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, unto this last, जॉन रस्किन के बुक से इंस्पायर्ड है तो लेना पड़ेगा unto this last, and often seen in form of, कहाँ दिखता है? गांधीज तालिस्मान, गांधीज तालिस्मान, TALISMAN, ठीक है, गांधी का तालिस्मान पता है, लुक एट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ठीक है, तो इसी में लिख दो क्योंकि इतना स्पेस भी नहीं ना सारी बातें करने का, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन रॉल्स? लीस्ट एडवांटेज्ड, एंड he is bringing a shift from merit to justice. But what is very important here is the concept of equity. What is equity? Do you understand equity? Equality with no, equity, fine. So whenever you talk about equity, equity is related to public policy, fine. Equality with justice or fairness. So equity is the work of civil servants. स्टेट इक्विटी इस्टेब्लिश करेगी, स्टेट की पॉलिसी है फेयरनेस, तो वो क्या कहता है? जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ द सोशल सिस्टम, फाइन. सो इट इज रॉल्स हु इज ब्रिंगिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी. अब यहां पर एक्सप्लेन करो कि यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है. इक्विटी किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ठीक है. नेचर में इक्वालिटी हो सकती, इनइक्वालिटी हो सकती है, लेकिन इक्विटी कौन लाएगा? स्टेट, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है. इसका मतलब क्या है? दिस इज, जब हम कह रहे एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पहले इतना तो लिख लो फिर बताते हैं. तो कम्युनिज्म लाना किसे? देखो, हम तो जो चीज फ्लो में आती है, हम रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं करते. रिसोर्स होने भी चाहिए. अगर मार्क्स कहीं आ रहा है तो लाओ, नहीं आ रहा है तो जस्टिस के डिस्कशन में मार्क्स का लाना जरूरी नहीं ना. मैम, ये जो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वालिटी वाले टर्म्स से ऐसे ऐड करके, मार्क्स जो है, अगर आप एक्सप्लॉयटेशन खत्म करने की बात करें तो मार्क्स लाएं. ये सेंस होना चाहिए कि मैंने जस्टिस में कौन थिंकर्स पढ़े. रॉल्स पढ़ा, आप सारे ही थिंकर थोड़ी लिखने हैं, और भी तो लिखना है. तो सेलेक्टिव कैसे बनना है, किसको लिखना है, किसको छोड़ना है, यही तो स्किल दिखानी है. एग्जामिनर को ये मजबूर करो सोचने के लिए कि ये इंसान मार्क्स क्यों नहीं लिख रहा, इसने रॉल्स ही को क्यों लिखने के लिए सोचा, और रॉल्स में से क्या बात समझ में आई. अब हम क्या नॉजिक का थोड़ी लिखेंगे, ये कोई पॉल साइंस का आंसर थोड़ी है ना. लेकिन एनीबडी राइटिंग और स्टडीइंग ऑन जस्टिस शुड नो अबाउट रॉल्स. तो बहुत कॉमन वाले लोगों को लिखना है. Marx is not quoted because Marx is anti-state.
वो तो रिबल है, उसको नहीं लिखा जाता है ना। उस ये भी आपको समझ होनी चाहिए that why in UPSC essays etc you will not quote Marx. He is anti-state plus गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिवेंटिव डिटेंशन बना रखा है इन लोग के लिए, और इन्हीं की विचारधारा से कोई इंस्पायर्ड होकर के एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे आएगा? तुम तो लाल सलाम वालों को बंद ही नहीं करोगे, तो मार्क्स लिखना ही नहीं है। ओके, तुम्हारा काम है मार्क्स को जेल में बंद करना, कि तुम्हारी तो नौकरी खतरे में है अगर मार्क्स की बातें सुनी। तो अब आगे बढ़ो, कहाँ पहुंचे? अब हम इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रहे थे? हाँ, अब ऐसे लिखो, लिखो राइट, लिखो रॉल्स ब्रिंग्स फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ इक्विटी which is very important concept associated with justice from the perspective of public policy. ठीक है, अब लिखो इट इज एसेंशियल टू पॉइंट आउट दैट whenever we talk about equity, it is related to the role of institutions. ठीक है, now what does that show? That human, ये सब ह्यूमैनिज्म है, that human action can convert a natural disadvantage also into, means you can minimize disadvantage. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप में इस बात का विश्वास होना चाहिए कि नेचुरली कोई डिसेबल है, नेचुरली किसी के अंदर कोई समस्या है, तो हम उसकी सफरिंग्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, यही इक्विटी है। ठीक है, तो जो इक्विटी का कॉन्सेप्ट है, two ideas of justice. One is Krishna's idea of justice, but that is insaf. Another is Buddha's ideas of justice, that is equity. And the idea of equity was, matlab, it is found in Ashoka. The concept of जो अशोका का धम्म है, क्योंकि इट इज अशोका हु इज सजेस्टिंग द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। तो इक्विटी का इंस्टीट्यूशनल एग्जाम्पल जिसमें स्टेट इज कन्वर्टिंग द नेचुरल डिसएडवांटेजेस, और अशोका का आइडिया बुद्धिज्म पर इन्फ्लुएंस्ड है। तो क्या इक्विटी का प्रिंसिपल आपको कौटिल्य या मनु में मिलता है? इवन गीता में भी इक्विटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। जस्टिस हैज डिफरेंट इमोशंस, तो जस्टिस इज वन विच इज प्रोसीजरल, डिओंटोलॉजिकल, रैशनल, लेकिन जो बुद्धिज्म में मिल रहा है वो वेलफेयरिज्म है, वो इक्विटी का प्रिंसिपल है, और इक्विटी स्टेट ड्रिवन है। और ये
खास बात है कि ह्यूमन जो है वो गॉड को चैलेंज कर सकते हैं. तो it is not that those who are born with certain disabilities, they are doomed to live with that. So we have to be very optimistic that with right kind of policies, we can make life of so many people better. They don't have to live like that. And gradually, from the philosophical theme, enter into public policy. कौन? हाँ, लेकिन मतलब वही है, इक्विटी का इंपॉर्टेंस समझिए, सोशल जस्टिस का इंपॉर्टेंस समझिए. सोशल जस्टिस के दो कॉन्सेप्ट हो गए. एक हो गया एरिस्टोटल, बट एरिस्टोटल इज टॉकिंग अबाउट मेरिट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फाइन. एंड जॉन रॉल्स इज टॉकिंग अबाउट इक्विटी. बट इक्विटी के आइडियाज कहाँ से आए? बुद्धा से. और एक स्टेट के फॉर्म में, एक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, it is Ashoka who tried to implement it. Okay, so you should be associating, मतलब show your knowledge how things are linked. इसलिए, और intelligently I have some good point, so I would like to turn the discussion towards this thing कि हम जस्टिस से इक्विटी को लिंक करेंगे, इक्विटी से बुद्धिज्म को लिंक करेंगे, और फिर उससे कॉन्स्टिट्यूशन को लिंक कर देंगे. चलो लिंक करो. क्या लिखा है आपने? अब इनका तो घंटी लग गई है. इतना बढ़िया सत्संग टाइप चल रहा है. अच्छा नहीं लग रहा आपको? हाँ, फिर क्या है, फिर क्यों जाने. चलो, तो इनकी तो आंखें वाखें सब थक गई. चलो लिखते हैं, लास्ट ये लिखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ाते हैं. कहाँ पहुंचे हम? रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, अब लिखो, एज रॉल सजेस्ट, justice and injustice has to do with the institutions, comma, as natural distribution is neither fair is neither just or unjust. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो पैराग्राफ. इसी को थोड़ा इस पे ब्राउनी पॉइंट्स लो अपने लिए, अपने कल्चर से लिंक करो. लिखो परहैप्स. परहैप्स, हमेशा परहैप्स ये सब ऐसे वर्ड्स यूज करिए. ठीक है, सेफ वर्ड्स हैं. लिखो परहैप्स the understanding of essence of equity can be drawn from the Buddhist idea of justice, which is linked to elimination of sufferings, comma, which was further institutionalized by Ashoka in his policy of Dhamma
What do you like in Ashoka? Tolerance. अब लिखो, अब हमारी नजर से अशोका को देखो, ठीक है? हाँ, अब मेरी नजर से अशोका को देखो, अपनी नजर से लिखे, राइट? पेट खराब, उस तो पढ़ नहीं रहे ना तुम लोग, हम लोग बंद कर रहे हैं 1 जनवरी से, नहीं पढ़ रहे हो है? तो फिर वो पॉल साइंस की नहीं रहेगी ना, उसलिए पर्पसफुली नहीं किया है, ओनली फॉर पॉल साइंस और दोज हु आर इंटरेस्टेड इन जियोपॉलिटिक्स, सबके लिए है ही नहीं, ठीक है? तो वो नॉर्मल किचन नहीं कि भाई कोई भी आए खाए, ठीक है? वो नहीं, वो एक्सक्लूसिव है। तो अब कहाँ पहुंचे हम लोग? पॉलिसी ऑफ धम्मा। तो अपनी तरफ से बहुत मतलब इन्वॉल्व होके अपनी नजर दिखाते रहो, ठीक है? तो अब लिखो, व्हाट इज मोस्ट अपीलिंग थीम इन अशोका इज that his justice oblique dhamma is not limited to humans, right? Rather, even extends to the world of animals, yeah, to the animals also. Animals also. ठीक है? तो उसने एनिमल्स के लिए भी टॉलरेशन और इन चीजों की बात की। तो जस्टिस एज फेयरनेस, इसके अलावा उसका ऐसे क्लोजर करो, लिखो, राइट? बिसाइड्स रोल्स, there is a galaxy of philosophers like Nozick, Dorkin, Amartya Sen, Michael Sandel, who have given कैसा, क्या दिया उन्होंने, क्या होगा सेंटेंस? Who has given justice, लिखो, लिखो, who have given infinitely valuable insights, ऐसे दिमाग में आना चाहिए, कैच करना चाहिए, valuable insights on the theme of social justice। आया समझ में? ऐसे क्यों नहीं आता? तुम लोग बातें आपस में कैसे करते हो हैं? हिंदी में भी तो ये बातें मैं हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन बातों का स्टाइल होता है। अब अभी खत्म नहीं होगा इसका डिस्कशन, नहीं, यही अभी भी नहीं खत्म हो रहा है बिना एक पॉइंट लिखे हुए। तुम्हें सबसे बढ़िया आइडिया तुम कहां पे क्लोजर करोगे? किसके आइडिया से यू विल क्लोज? आइडिया ऑफ जस्टिस, गांधी, अंबेडकर, लेकिन इन सबके आइडिया कहाँ हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस देके आगे बढ़ोगे, ओके? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया ऑफ, अब क्या लिखना है? लिखो, इसमें क्लू लिखो, गिव आइडिया ऑफ जस्टिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लिख तो सब देंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे उस पे इंपॉर्टेंट, क्या चीज ऐसे लिखोगे, स्टाइल बताइए। Constitution is reflective of above ideals.
कॉन्स्टिट्यूशन डे आ रहा है, थोड़ा फील करिए आप क्या भावना रखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, आपकी नजर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? माइक क्यों नहीं देते हो तुम? That even after more than 7 decades of the constitution being built, the idea of justice that is in practice is through the constitution, and then we can start. Tell me, you have to give idea of justice of Indian constitution. You have to give, because you have to write from that perspective. So what is constitution in your eyes? Minority appeasement? Matlab, you can't be so realist. But it was a good answer. Speak one line on the constitution. सोशल डॉक्यूमेंट, इसमें खास क्या है? ये तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा, आप नहीं कुछ सोच सकते हैं? It is a part of social transformation initiative. सोशल आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का मीन्स है, और क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? ये सब किसी ना किसी का है, आपका खुद का कोई फीलिंग नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? अंदर से आ रहा है तभी तो। किसकी है? मैम मेरी अपनी है। ये तुम्हारी? यस मैम। तुम बिल्कुल मतलब मैम बट अभी मैच तो कर गए। मैम अभी तो ये है ना कि हम जो भी पढ़ते हैं हमारा फाउंडेशन का नॉलेज तो कहीं से ही आएगा ना। ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर किसी ने बढ़िया लाइन कह दी, 5 लोगों को अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी की भी डंग की होगी यस उसको मिलेगा एक सिल्क। क्या मिलेगा? चॉकलेट मिलेगी। Okay. और अगर कोई नहीं बता पाया तो तुम लोग सब पैसा जमा करके चलो 5, I need 5 people to speak one line on the constitution. Anybody, any? Constitution is a way of life. Next, इनके जाइए, पीछे जाओ, पीछे जाओ। अच्छा, Our constitution is nation building. Our constitution is nation building, मतलब वो कहाँ पे है वो बिल्डिंग? गली नंबर? इनका कहना था कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉयर्स पैराडाइज। इस पर हम ऑनलाइन वोटिंग करा देते हैं, जिस पे लगे कि ये सही, ये एक इनका कहना है। और किसी ने दिया था? मैम, our constitution is a feminist document. कौन सा डॉक्यूमेंट? Feminist. मिस्ड डॉक्यूमेंट? Feminist डॉक्यूमेंट। Our constitution is feminist क्यों? Feminist document, ma'am, treating a male and a female equally. हमारे पैसे बच गए। Ma'am, it's a fundamental set of rules to the government and Constitution is a fundamental set of rules. yeah. That is any constitution. You express feeling about your constitution in your eyes. What? Book of love. Ma'am, it is a living document. एक सेकेंड, ये वाला तो यू कांट, दैट इज नथिंग स्पेशल, दैट इज यू बीइंग सो इंडिफरेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल लॉ, व्हाट इज योर document that makes India breathe? India breathe. That makes Ma'am, it is a living document. what? Living document. What is new? This is all people have said. ये तो बेकार है, ये जेनरिक है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। वे ऑफ लाइफ तो बिल्कुल नहीं है।
Who follows? It is not even the government. Those who are in government, they don't follow. Ma'am, And breathe. India is breathing, Ma'am. and we are breathing pollution. And you are blaming Constitution. No. My God, you don't. ma'am, Constitution is the reconciliation of Indian and Western idea. अरे कुछ खास नहीं है ना, जो कुछ आपके दिल से आए. इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के कारण नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कारण है भाई. मैम, अब 5 से ज्यादा हो गया एक मैम, इंजीनियरिंग वालों को. Indian Constitution is the means to fulfill the dream of Ram Rajya. मजा एक मतलब आप ही लोग बता दो किसके स्टेटमेंट में मजा आ गया. अभी तक कोई आया? Ma'am, Constitution is output of Indian national struggle. Constitution is Is outcome of Indian national freedom struggle. Constitution is outcome of India's freedom struggle. चूंकि ये इंजीनियर है, अगर आप आउटपुट बोलते मतलब तो वो ज्यादा अच्छा लगता. तुम्हें अच्छा लग रहा है. अगर यहाँ पे हम वोटिंग करा देते, किसी का भी डेफिनेशन पसंद आए तो उसको दे दे रहे चॉकलेट. Ma'am, जिसको आप वोटिंग कर रहे हैं, आप बता दें किसकी डेफिनेशन को चॉकलेट दी जा सकती है. इनकी सुन लीजिए, 2 और बचे हैं. तुम्हारा अच्छा था माइनॉरिटी अपीजमेंट, और इनका बिल जाता है अगर ये मतलब आउटपुट बोलते. ये कुछ बता रहे हैं. मैम, ऐसे जिस तुम ही लोग बताओ, इतने लोगों में से कोई डेफिनेशन आपको पसंद आए, उसे नाम दे दिया जाए. Indian Constitution is a savior of who? It restricts the monopoly of one's doing something freely. कोई ऐसा आपको लगा इनाम लायक? हाँ, इनका सुन लेते. Treaty on social justice signed on 26 November. Treaty of social justice, which is brainchild of the elite elected in constitution. The Indian Constitution is a part of Viksit Bharat. क्या? आप बताएं. It is a charter of aspirations. Ma'am, छोड़ो. it's Lakshmikant for Indian spectrum. चलो छोड़ो. फिलहाल nothing is appealing. That appeal आनी चाहिए. अच्छा चलो छोड़ दो. लास्ट लाइन लिखो. ड्रिंक मनोज है. हमारे अकॉर्डिंग हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमने कई बार ऐसे किसी शॉर्ट्स में भी बोला है चॉकलेट. आगे से रखेंगे, फिर एक पूछते हैं. Hello. Ma'am, Constitution is the expression of general will of the people of India that ensures justice and creates the basic structure for our nation to ensure full potential, full human development. What is nothing is special. Just तुम लोग नहीं मैच नहीं कर पाओ, छोड़ो. Just surrender and मेरा चॉकलेट बच गया है. हाँ, तो हमारा जानिए, जब हम किसी के बारे में बोलेंगे. हाँ Ma'am, our constitution is what we best learn from colonizers.
and Western अरे ideas. छोड़ो कॉन्स्टिट्यूशन, मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो तुम क्या बोलते? क्या मैम उसको क्या कॉन्स्टिट्यूशन है? मतलब क्या बोलना है उससे? अरे फीलिंग आनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो फील नहीं आ रहा है, वो इंप्रेशन नहीं आ रहा है। हाँ हाँ बताएं आप क्या बोलते हैं। अच्छा चलो मैम कश्मीर भाई, जब आपसे कहा जा रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलो, मैम तुमसे यूएन में तुम्हें बोलना हो, तो इसमें कुछ भी इंप्रेसिव है क्या? मैम बोले मैम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जान है, धड़कन है, हाँ? सब कुछ है। क्या? ठीक है, हमारी चॉकलेट बच गई, छोड़ो। हाँ, तो अगर हमसे कोई पूछे आपके लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है या क्या, तो सबसे पहली बात तो हम क्या बताएंगे कि वो बेस्ट बुक है इन एवर रिटन इन फिलॉसफी। ठीक है, कुछ आप खास, अगर हम पॉलिटिकल, हम फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, पूरे पॉलिटिकल साइंस के सिस्टम में इससे बढ़िया फिलॉसफी की कोई बुक नहीं है। तो जिसके बारे में बोलना है उसको द बेस्ट क्यों नहीं निकल रहा था मुंह से? क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? एक किताब है, क्यों नहीं? किस चीज की किताब है? उस कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है, फिलॉसफी है, आइडियाज हैं, जिससे दुनिया भर में आइडियाज, खुद रॉल्स की थ्योरी बाद में आई, विल किमलिका की थ्योरी, तो उसे बेस्ट बुक ऑफ फिलॉसफी करके क्यों नहीं लिख रहे हो? क्यों? क्योंकि आप तो सोशल जस्टिस का आइडिया एक्सप्लोर कर रहे हो ना, तो एक्सप्लोर किसी किताब से करोगे तो बेस्ट किताब कौन सी है? तो कुछ खास बात बोलो ना, द बेस्ट। हाँ, जिनके लिए मनुस्मृति बेस्ट है, सबसे मतलब वही है ना, सबसे भले मूड जिन्हें न व्यापे जगत गति। ठीक है, अब उनका हम क्या ही कर सकते हैं। तो आप जब भी लिख रहे हो, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस की बात कर रहे हो, उसकी भाव बढ़ाना है, द बेस्ट। बाहर जाके मेरे क्लास के बारे में क्या बोलना है? द बेस्ट। ऐसे नहीं लॉयर्स पैराडाइज एस्पिरेशन। इसीलिए हमने कहा, मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो तो क्या बोलोगे भाई? द बेस्ट ऐसे बोलना है उसको। व्हाट? ऑनलाइन कमेंट्स देते हैं अभी, बाद में, यहां पहले खत्म करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ गाइड बुक ऑफ द स्टेट, इट इज नॉट सो अपीलिंग। कुछ खास होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम थ्रेड दैट weaves a billion diverse lives into the single sovereign fabric of the country। ठीक है, अब हमने पहले तो ये समझो, कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस से हम जस्टिस डिस्कस करेंगे और यही हमारा अल्टीमेट है, तो ये हमारे लिए अल्टीमेट बुक है। और उसको हम अल्टीमेट बुक इसलिए नहीं इमोशनली ले रहे हैं, इसलिए कि हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि देयर इज नो बेटर बुक ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इमोशनल, आप जिस चीज के लिए इमोशनल हो, लेकिन उसको लॉजिकली स्टैब्लिश करिए। क्यों हमने इस ढंग से लिखा? क्योंकि हम तो डेफिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस ले रहे हैं। तो डेफिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस फाइनली हम किसको मानेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन को। क्यों मानेंगे? इससे बढ़िया कोई बुक ही नहीं है। आ गया समझ में? अब लिखो, लास्ट लिखो, हमें भी जानना है भाई, मेरे को तो और भी काम है। चलो लिखो, लिखो, नो डिस्कशन ऑन आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस कैन बी कंप्लीट without discussing the idea
as found in Indian Constitution, considering the fact that there is no better book of political philosophy than our Constitution. देखो, it is a classic in itself. And therefore, it is natural to refer the idea of justice, which is explicitly mentioned in the preamble, that is justice, social, economic, and political, with the ultimate objective of ensuring unity and integrity and human dignity. ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे. Thank you for not giving any exciting idea. Saved my money. Thank you so much.